Today I am sharing with you all on Knowledge Wave a very informative tutorial about basic components of MS Word. MS Word, which is also known as Winword or Microsoft Word, or in short, Word as well. So, when MS Word originated, what is MS Word? It is actually an application software. There are two types of software: system software and application software. And MS Word is an application software, means it is designed for a particular purpose, to make text based documents, and was launched in 1983 by Microsoft Corporation. It is a word processor, and in past many version of MS Word with incredible features we all have witnessed and used as well. And I have used a lot of MS Word in my document and in my academic life. So it is a very handy and very useful software. MS Word versions 2013, 2016, and now it's MS Word for Office 365, the latest addition of MS Word. MS Word file extension is .docx, just like Notepad is .txt, and for PowerPoint we use .ppt. MS Word window elements. विंडो इज व्हेन वी ओपन अप सॉफ्टवेयर, जैसे मैं एम एस वर्ड खोलूँगी तो एम एस वर्ड में जो स्क्रीन मुझे ऑब्वियसली नज़र आएगी, सो दिस स्क्रीन इज नोन एज विंडो. नाउ सबसे एट द टॉप there is title bar. The first most horizontal bar is the title bar, topmost. Then second, where file, home, and different menu, there are 7 important ribbons in present. But these menu are these menu, when we just click on file, a menu open and different options come like in it, like file, and when I click on file, save as, and different options. So this the second horizontal bar is the menu bar, and the third one is the ribbon. It is not a bar but a ribbon. Why ribbon? Because you can see that Times New Roman is written. It's font जो है वो असल में जो हम लिखते हैं, राइटिंग होती है यहाँ, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं राइटिंग, एरियल या टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते हैं. हेडिंग के लिए हम फॉन्ट साइज 16 और सब हेडिंग के लिए 14, और जो फॉन्ट साइज हम टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, वो 12 यूज़ करते हैं. बोल्ड थोड़ा सा जो हेडिंग है उसको थोड़ा सा टच देने के लिए, जस्ट लाइक कि वो हेडिंग की फीलिंग आए, तो हम उसे बोल्ड करते हैं और उसे फिर अंडरलाइन कर देते हैं. Then we have font color and different many indentation and paragraph spacing, line spacing option, fill color option, and border option in the ribbon tab over here. Then the area where we write, the page area, is known as text area. Now look at the downside. This is document information. At the bottom side, at the left side, you can see this is document information. The page number is written with the purple color. I have highlighted the page number and the words in the document. Then coming at the right bottom side, you can see view buttons. That is, I will discuss it later on. And then we have zoom tool. जूम स्लाइडर इज़ यूज जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ दैट पेज को हमको कितना जो है वो मैक्सिमाइज रखना है या मिनिमाइज करना है. यानी कि जब हम मिनिमाइज करेंगे तो पेज हमें थोड़ा सा कम नज़र आएगा, और जब हम थोड़ा सा मैक्सिमाइज करेंगे, प्लस करेंगे, सो इट विल लुक लाइक इसमें अल्फ़ाबेट्स हमें बड़े नज़र आएंगे. Again repeating, I'll just repeat what I have explained. The topmost is known as title bar. Topmost जब हम विंडो ओपन करते हैं, एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर को जब हम ओपन करते हैं, सो विच इज़ ऑल्सो नोन एज विंडवर्ड, तो जो टॉप मोस्ट पे हमें नज़र आता है बार, दैट इज़ नोन एज टाइटल बार, जिस पे डॉक्यूमेंट का नाम भी लिखा होता है. डॉक्यूमेंट का नाम ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा है तो डॉक्यूमेंट 1 हमेशा. आप अपनी मर्ज़ी से बेस्ड ऑन वट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वी आर मेकिंग हम टाइटल बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड जो है वो इसमें वर्क होता है सारा. सो इसमें हम
रेज्यूमेस बना सकते हैं एम एस वर्ड में. वी कैन जस्ट create a resume, CV, letter. We can write essays. We can draw tables, and we can insert charts, pictures. Different options are in MS Word, and it is a very useful and handy software. Then at the rightmost corner of the title bar, you can see there are three control buttons. दी लाइन जो बनी हुई छोटी सी, दिस इज नोन एज मिनिमाइज. जो दो स्क्वायर बने हुए हैं, दैट इज नोन एज रीस्टोर बटन. एंड द थर्ड वन दैट इज क्रॉस इज नोन एज क्लोज, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार एक शॉर्टकट होता है, यानी कि समराइज करें हम पूरा अपने सॉफ्टवेयर को एम एस वर्ड के, तो जो इम्पोर्टेंट इसमें कमांड्स होते हैं वो जो है वो शॉर्टकट फॉर्म में जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार में जो है वो उनको जो है वो उसमें जो है वो, जैसे यहाँ पे कट का ऑप्शन है, इवन दो ये डिफरेंट ऑप्शंस में अवेलेबल होगा, लेकिन ये क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे तो हम फ़ौरन से जो है वो स्क्रीन पे जाके हम फ़ौरन से जो है वो इसे एक्सेस कर सकते हैं, एंड वी कैन कट वेयर इट इज़ नीडेड. The menu bar is second horizontal bar, and first one is title bar, second one is menu bar. Over here you can see file, home, insert. These are very important menu bar options, and tabs you can say. And then third one from top to the third down, you can see there is the option जिसमें बहुत ही ज़्यादा आप देखें फॉर्मेटिंग के और एडिटिंग के ऑप्शंस होते हैं. दिस इज़ नोन एज रिबन. इसमें आप देखें टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है. फॉन्ट मीन्स जो राइटिंग हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो फॉन्ट कहते हैं हम एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में. और 12 जो है ये फॉन्ट साइज़ है. स्टैंडर्ड टेक्स्ट का और हेडिंग के लिए हम 16 यूज़ करते हैं, सब हेडिंग के लिए 14. और बोल्ड वी यूज़ फॉर हेडिंग ताकि वो ऑब्वियस लगे. देन वी हैव और डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हेयर. हाईलाइटर ऑप्शन विद पेन और येलो सा जो बना हुआ है. एंड देन रेड कलर, दिस इज फॉन्ट कलर ऑप्शन ए विद रेड कलर डाउन. इट इज़ फॉन्ट कलर, यानी कि हमें जो टेक्स्ट का कलर रखना है वो कौन सा रखना है, कौन सा हमें सेलेक्ट करना है. देन ज़्यादातर हम जब ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो हम उसमें ब्लैक फॉन्ट कलर रखते हैं, लेकिन जब हम कलरफुल बनाते हैं वी यूज़ डिफरेंट कलर्स. Then we have indentation, that indent right, indent left, or indent in the indent in the center. And then we have over here paragraph spacing and line spacing option, then fill color option and border. There are many tools in the ribbon tab, or you can say ribbon, simply ribbon. The area where we write down, this is known as text area. एंड जो इंडेंटेशन हम करते हैं, यानी कि ये जो मैंने लिखा है 7 डॉट रूलर, यानी कि 7 डॉट के बीच में एक स्पेस और फिर रूलर, दिस इज नोन एज इंडेंटेशन. यानी कि मैंने एक स्पेस रखा 7 और रूलर के बीच में. चाहते तो टैब स्पेस 8 स्पेस भी रख सकते थे. सो देयर आर टू रूलर्स, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर. दिस इज हॉरिजॉन्टल रूलर. Scroll bar, movement from up to down and from left to right, vertically and horizontally. There are two scroll bars, vertical scroll bar and horizontal scroll bar. So we used to move from up to down and left to right on the page of our document. स्टेटस बार जो बॉटम यानी कि एंड में बिल्कुल एक लाइन बनी होती है, जिसमें मैंने डिफरेंट ऑप्शन अभी डिस्कस भी किए थे, जिसमें हम पेज नंबर्स देखते हैं, कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स हमने डॉक्यूमेंट्स में बनाए हैं. दिस इज़ नोन एज जो पूरा बार होता है नीचे, दिस इज़ नोन एज स्टेटस बार, जो हमें स्टेटस बता रहा होता है हमारे डॉक्यूमेंट का ब्रीफली. इसमें जो है वो स्लाइडर्स भी आ जाते हैं, जूम का ऑप्शन भी आ जाता है. और ये देखें, आई हैव डिस्कस ब्रीफली अभी प्रीवियस स्लाइड में, और अब मैं दोबारा से बताती हूँ. डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन पेज, कितने पेजेस हैं डॉक्यूमेंट में, 4 हैं. इस डॉक्यूमेंट में 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है. डिपेंड्स हाउ मच लेंथी वी आर मेकिंग द डॉक्यूमेंट. एंड देन हाउ मैनी वर्ड्स आर यूज. अभी तो इसमें 0 वर्ड्स हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो फिर वर्ड्स इंक्रीज होते हैं.
देन ये काउंट करके इसमें वर्ड दे देता है, हाउ मेनी वर्ड्स आर प्रेजेंट इन आर डॉक्यूमेंट, एंड देन द लैंग्वेज, उर्दू में अगर डॉक्यूमेंट बनाया उर्दू, इंग्लिश में अभी डॉक्यूमेंट है, इंग्लिश सेटिंग हुई हुई है तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है इसमें. देन यू कैन सी ओवर हेयर इन द नेक्स्ट स्लाइड दैट रूलर की बिल्कुल साइड पे एक एल, छोटा सा एल बना होता है, दिस इज नोन एज टैब सेलेक्टेड. टैब इज नोन एज 8 स्पेसिंग फ्रॉम दी, जैसे 7 डॉट करके मैंने एक स्पेस दिया था तो ऐसे 8 स्पेसेस होते हैं. एंड स्पेस वी गिव कीबोर्ड पे जो हम स्पेस देते हैं वो स्पेस बार की से देते हैं. देन व्यू बटन्स, व्यू बटन्स क्या होते हैं? डेफिनेटली देयर 2 पेजेस हमें एक वक्त में देखने हैं, या हमें एक पेज की सेटिंग रखनी है, या हमें वेब लेआउट, दैट इज इंटरनेट. सो दिस इज व्यू बटन ऑप्शन. ये भी बॉटम साइड पे जो है वो गिवन होता है. बॉटम मीन्स एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो कि स्टेटस होता है उस पर गिवन होता है. और दिस इज जूम टूल्स. जूम टूल्स आर परसेंटेज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज करके हम जो है वो पेज के जो है वो जो है वो माइनस की साइड पे जाएंगे तो पेज हमारा जो है वो ब्रॉडनेस यानी कि उसकी विड्थ कम हो जाएगी, और जब हम प्लस करेंगे तो उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप दैट the information is beneficial, and it will help you in your further education and in using MS software, MS Word software. I hope that you all are having a good time watching my videos. So if you like the video, so thumbs up, and do subscribe to my channel, Knowledge Wave. Thank you so much for watching, and and this is a tutorial of MS Word. I am repeating once again. Thank you once more. Keep watching Knowledge Wave. Thumbs up if you like, and do not forget to subscribe. Bye. Allah Hafiz.